अबाउट ग्राफ बिकॉज आपको ग्राफ प्लॉटिंग आती है. आई डोंट थिंक इसमें कोई मसले वाली इतनी चीज है, ग्राफ सबको बनाना आता ही है. कुछ चीजें जो याद रखनी है. There are 4 marks for the graph, and to ensure that you get all those 4 marks, make sure first of all that if your line, that line has to be of a best fit. So obviously this is a very complex line, but you could maybe get a line where you have 1 point upar and koi 1 point niche. Okay? And rest of the points, let's suppose, are on the line. Okay? So that's a fair enough, good enough line. Just make sure that the points that you're leaving are not all on one side. That is the most important key thing for a best fit line. Number one. Number two, once you have plotted the best fit line and once you've plotted the points and everything, make sure that your axes are labeled with the units. अगर आप units के बगैर उनको label करेंगे, you will not get the mark for it. Always remember कि आपके पास जो scaling आपने करनी है, अगर आपको for example उन्होंने डब्बे बना के नहीं दिए हुए and you have to actually choose a scale, never ever choose an odd scale. An odd scale का मतलब ये है कि ये मेरे पास 1 2 3 ब्लॉक है, मैं कहता हूँ अच्छा मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको मैं 6 कर देता हूँ, इसको मैं 9 कर देता हूँ. That's an odd scale. Because आप ये जो 10 छोटी divisions हैं, 3 divided by 10 is an odd scale. We don't like it. So उसके अलावा don't go for 7, 14, 21. But what are the correct scales? So you could go for 0, 1, 2, 3. You could go for 0, 2, 4, 6. You could go for 0, 5, 10, 15. ये सारे आपके correct scales हैं. ये these are not odd scales, और जो ऊपर 2 ब्लू वाले बनाए हैं these are odd scales. अच्छा, अब एक और चीज जो कि करनी बहुत जरूरी होती है, अगर आपको कोई अननोन वैल्यू निकालने को वो कहता है या वो आपको ग्रेडियंट बनाने को कहता है, ऑलवेज शो दिस वर्किंग ऑन द ग्राफ. एक रूलर पकड़ो एंड प्लॉट इट डॉटेड लाइन. अगर आपको वो ग्रेडियंट निकालने को कहता है, ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो ग्रेडियंट का ट्राइंगल है ना, इसका जो ये हाइपोटेन्यूस है ना, that has to be bigger than half of your line. So that's a very key important thing to remember when you're calculating gradients. So एक तो ये वाली सारी चीजें हो गई. अच्छा, इसके बाद आई थिंक आपसे ग्रेडियंट वाला सवाल हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं जी. कासिम. Sir, जी जी. do we always have to use a triangle for calculating rise over run? Can we just directly mark values? नहीं, मार्क लाइन मतलब ट्राइंगल अगर आप बनाते हो, अगर आप या तो ट्राइंगल बना लो या वो दूसरी वाली चीज कर लो, वो जो ये वाला होता है, ये वाली चीज कर सकते हो, वो भी ठीक है. बट अगेन द प्रिंसिपल इज द सेम. ये जो है should be bigger than half of the gradient line. ठीक है. अच्छा, पेपर 4 में जो सबसे लाइक कबाहत वाली चीज होती है और सबसे टेक्निकल चीज होती है ना, वो ये होती है कि मैं आपको, let me share this with you also because this is going to tell you exactly how important it is to make sure that your readings are spot on. If you look at this, उन्होंने कहा था कि जी mark the length of the rod above the water. ठीक है, एक बंदे ने ये बना दिया. If you notice, हल्का सा it is off, इतना सा. अब ये एग्जामिनर भी इस तरह मैग्नीफाई करता है आपकी स्क्रीन पे, उसको नजर आ गया, he was not awarded this mark. So when you're drawing diagrams, make sure that your pencil is sharp and your lines are immaculate. They are not, जैसे अगर आप ग्राफ की लाइन बना रहे हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई छोटा वाला रूलर लेके चला गया, उसने आधी लाइन ऐसी बनाई और हल्का सा टिल्ट आ गया. ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा, वो इसको यूं मैग्नीफाई करेगा, मैग्नीफाई करके कहेगा, वो कहेगा ये किंक है, और
एक ही लाइन का नंबर है भाई, 4 नंबर है उसमें से एक लाइन नंबर का है, वो आपका -1 कर देगा। सो पेपर 4 में आपने इस चीज का जरूर ख्याल रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ चीजें क्या, सो आई हैव गिवन यू दीज नोट्स। आई वुड सजेस्ट ये जो एटीपी गाइडलाइंस एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है ना, प्लीज डू गो ओवर देम। मैं इनमें से जो मोटी मोटी चीजें हैं मैं उसकी बात कर लेता हूँ, because obviously we're left with now half an hour, so we won't be able to cover all of these things, but I'll tell you exactly where to look at in this document. And then alongside that, I will also share this curated list of questions, which is a topical paper 4. I'll share it with Ms. Mariam so she can share it with all of you also. For those of you who are from LGS, you will get a copy of this through the school admin. Acha. So now, कुछ मोटी मोटी चीजें, what are the common mistakes that बच्चे make? This is the first, ये हमने अभी ±10% वाली हमने बात कर ली है कि आपके पास अगर एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी के ऊपर कभी भी सवाल आता है ना कि ये जो दो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज सेम है या नहीं है, तो आपने 10% के अंदर अंदर उनको देखना है। अगर तो उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय एवरेज 10% से कम है तो वो सेम है, इफ इट्स डिफरेंट देन इट्स डिफरेंट। Now, when you're writing about human error, so again, what is the most common mistake over which people lose marks? They write generic statements in paper 4. So, misal ke taur pe, if let's suppose you're taking time, and when you're taking time, you have a human reaction error. So rather than writing reduces or minimizes human reaction error, which is a false statement, because remember, if you're averaging, Maz, I'll just take you in a minute. If you're averaging, let's suppose, if you average things 2 or 3 times, you're not technically changing my reaction time, which means you're not changing my human reaction error. You are reducing and minimizing the effect of human reaction error. So that's the right terminology. G Maz, please raise your hand. I'll take your question now. J. Sir, where could we receive these notes from? Sorry? The one which, where could we get these notes from, these ATP guidelines and all this? So you will be intimated through our Insta page, and when we upload the videos on our YouTube channel, we will put that information over there as well. Okay. Chale. Next. Up. Another very common question is, why do we take repeated readings? Again, because repeated readings give average and average is more accurate. Do not write the statement jo upar likhi hui hai because it is more accurate or give more accurate readings. Please be specific कि अगर आप repeatedly experiment को repeat कर रहे हो तो you are getting an average value, and an average value is more accurate than a standalone value that you take. ठीक है? Then, whenever you are asked to improve an experiment, most likely than not, you have to always connect with the problem that is there in the apparatus and then improve it. Do not simply improve things hawa ke andar, because this is what people do. They write generic statements. So again, it goes without saying that generic statements in ATP will not get you any marks. So misal ke taur pe, if you want to improve an experiment to determine the time period of the pendulum, so one of the ways of improving this is to probably repeat the experiment with different lengths or with different type of bobs. Okay? If you're writing about parallax error, please, when you're phrasing your answer, so the phrasing is, your line of light should be perpendicular to the reading on the apparatus or the scale. Your view at eye level of the apparatus. Okay? You can also draw an eye on the diagram. Okay? Acha, a lot of people don't know about a fiducial aid. So whenever you're measuring oscillations, a fiducial aid is something that helps you. So what is a fiducial aid? So for example, if this is a pendulum that is oscillating, what I do is I put a fiducial aid in the middle of it.
What is the fiducial aid? It allows me to count when when the reading is changing. So for example, the first time this passes towards the right, I count that as 1. अब ये oscillations होती जा रही हैं. So the second time that it will pass here, I count it as 2. Then the third time is 3. So what does a fiducial aid do? A fiducial aid, first of all, is placed on the mean position of the oscillation. Number 2, the fiducial aid allows me to iterate my counting as the oscillations take place. And ये question commonly आता है, why are we putting the fiducial aid at the mean position? Why not at the extreme position? Because as the oscillations continue to go, after a certain while, the pendulum won't get to the maximum position. The maximum position keeps on receding or decreasing. इसी वजह से हम लोग उसको middle point पे लेते हैं, because we know that even when the oscillations are dying out, they would still pass through the mean position. ये मैंने आपको बता दिया कि जो प्लॉटिंग है ग्राफ के लिए ये 4 मार्क्स किस चीज के लिए हैं कि एक्सेस, स्केल, प्लॉटिंग एंड ड्राइंग. मेक श्योर इसमें से कोई भी एक चीज स्किप होती है, यू विल लूज ऑल 4 मार्क्स. अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, देखिए जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल की सिर्फ 2 ही शेप्स हो सकती हैं. So a directly proportional graph would be passing through the origin and would be a straight line. An inversely proportional graph would be a graph that is not touching any of the axis and has a shape of this sort. Rest of the graphs can never have the same shape. So for example, if you have a direct linear relation and a direct non-linear relation. So an example of a direct linear relation is this. Of a direct non-linear relation is this. Another example is this. So ये सारे के सारे ग्राफ non-linear direct relation है. क्या मतलब है कि जैसे जैसे x increase हो रहा है, y भी increase हो रहा है. और inverse, अच्छा, अब when you're writing when you're only talking about inverse relations, always remember, skip the word proportional. Proportional सिर्फ इस ग्राफ के लिए इस्तेमाल होना है inversely. बाकी सब क्या है? इनवर्स या तो लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है या इनवर्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है. इनवर्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स की क्या एक है? सो ये एक इनवर्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, बिकॉज इट्स टचिंग हियर, इट्स टचिंग हियर. ये एक और इनवर्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप है. और ये एक इनवर्स. बड़े लोगों को लगता है जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये है, और वो गलत कर देते हैं. सो प्लीज ये तो आप throughout yaad rakhna. So please, when you have to describe linear relationships, always say as x is increasing, y is increasing, sometimes in a linear way, sometimes in a, when you're simply describing relationships which are not proportional. So proportional bada important और weighted term होती है, इसको आपने खामखा इस्तेमाल नहीं करना, उसके सिर्फ ग्राफ ही ये हो सकते हैं. So this is directly proportional and this is इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है. बाकी सारे क्या है? रिलेशंस हैं. नाउ हैविंग सेड दैट, लेट मी लुक एट सम गुड टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स जिनको हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. सो वी हैव लास्ट 12-15 minutes left, so I think this is good use of the time. Now when you're measuring length, ठीक है, जब आप length measure कर रहे हैं, you have to avoid parallax error, hence you have to make sure that you're viewing perpendicularly. कोशिश करें that the ruler is placed close to the apparatus. सबसे अच्छी बात क्या है? Ruler is in touch with the apparatus. Whenever something, देखो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ruler है, ये मेरे पास पेंसिल है. अगर मैं इसकी अगर मैं आपको, अगर ये टच में नहीं है and I have to take a reading from somewhere here, तो उसमें parallax error आ सकता है. लेकिन अगर ये दोनों in touch आ जाएं, अब ये देखो ये in touch तो हैं, लेकिन it is not in touch with this thing. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? मैं probably
सेट स्क्वायर इस्तेमाल करूंगा। जब मैं सेट स्क्वायर इस्तेमाल करूंगा सो आई गेट एन एग्जैक्ट रीडिंग ऑन द स्केल जिसके अंदर मेरा पैरेलैक्स एरर आने का मसला खत्म हो